channel to Krishnan Group of Educations of Krishnan Public Senior Secondary School. And today's our topic is multiplication. In previous class, we have studied about properties of multiplications. Now today's we solve sum multiply. Multiply. Now we solve multiplications of two-digit number. Multiplications of two-digit number. First example, 56 into 23. First example, 56 into 23. Now, first we solve without carry. First, we solve without carry. 3 1 जा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15. क्लियर. नाउ फर्स्ट नंबर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15. नाउ राइट हियर क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा 10. What will you do? Now we solve addition. 3 5 2 7 1 1. Clear? First we solve multiply 3 से करेंगे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई. Now नेक्स्ट नंबर 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 5 जा 10. Now नीचे एडिशन 3 5 2 7 1 1. सेकंड विथ कैरी. ओके. नाउ सॉल्विंग 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 6 जा 18. नाउ पुट योर 1 कैरी. ओके. नाउ 3 5 are 15 and 1 16. Clear? पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, then 3 को 5 से. 3 6 are 18, 1 carry, 3 5 are 15 and 1 16. Now next number is 2 and put here cross. सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो. नाउ नेक्स्ट 2 6 जा 12 है. नाउ पुट द कैरी. द नेक्स्ट नंबर 2 5 जा 10 and 1 11. क्लियर. 8 6 and 2 8 1 and 1 को 8 के 2. नाउ राइट हियर 1 1288. Answer third 36 4. Clear? Now first we multiply 6 by 4. 4 6 are 24. Put the carry. Next number 2 4 5 are 20. 2 carry 8 करेंगे 28 22. Now next number put the carry 2. Now 4 2s are 8 and 2 10. Clear? Now put your cross. 2 6 are 12 है. Put your 1 carry. 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2 6 are 12 है. Right here 1 carry.
multiplications by 3-digit number. First, okay, 234 multiplied by 431. 734 right here. Now 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? वही नंबर, सेम नंबर. Now 1 4 is 4, 1 3 is 3 and 1 7 is 7. Now cross 3 4 is 12. Now put here 1 carry. 3 3 is 9, 9 and 1 10. 10 का 0. Here 1 carry. 3 7 is 21, 21 and 1 22. Now look here students, right here 2 cross. जब 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ क्रॉस भी बढ़ते जाते हैं. फर्स्ट 2 डिजिट में मल्टीप्लाई किया 1 क्रॉस. नाउ नेक्स्ट लाइन 2 क्रॉस. नाउ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 by 4. 4 4 जा 16, 1 carry. 4 3 जा 12 and 1 13. Okay, now put here 1 carry. 4 7 जा 21 and 1 carry 22. Okay, 4 7 जा 28 and 1 29. Okay, now add करो 4 3 and 2 5 7 और 6 8 करेंगे 30 1 carry. 3 and 2 5 और 1 6 9 and 2 11. Write here 1 carry. 2 and 1 3 and our answer is 3,16,354. Next, multiplied by 235. Now first 5 multiply 5. 5 5s are 25. 2 carry. 5 4s are 20 and 20 or 2 22. Next 2 carry. 5 6 are 30. 30 and 2 32. 3 carry. 5 3s are 15. 15 and 3 18. ओके, 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया. 5 5 जा 25. 2 carry. 5 4 जा 20. 20 में 2 carry ऐड करेंगे 22. राइट हियर 2. नेक्स्ट नंबर 2 carry लगाए. 5 6 जा 30. 30 and 2 32. राइट हियर 2 and put the next number carry 3. 5 3 जा 15. 15 में 3 ऐड करें 18. Now right here cross. 3 5s are 15. 1 carry. 3 4s are 12. 12 and 1 30. 1 carry. 3 6 are 18. 18 and 1 19. 3 3s are 9 and 1 10. Now 2 cross because 3 digit number. 2 5s are 10. 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया. 10 का 0 1 की. 2 4s are 8. 8 and 1 9. 2 6 are 12. 12 and 1 कोई कैरी नहीं है यहाँ पे, तो 2 4 जा 8 and 1 9. यहाँ कोई कैरी नहीं थी. 2 6 जा
solve here. 5, 5 and 2, 7, 3 and 2, 5, 9 and 9, 18, 18 और 8, 18 और 8, 26. Now 6 here, 2 carry, 2 and 1, 3, 3 and 2, 5, 7 and 1, 8. Okay, now we solve 3-digit number. Now we solve some word problem. We solve some word problems of multiplications. Word problems. First, the cost of one chocolate is rupees 8. Okay, find the cost of 10 such chocolate. Now I again repeat, the cost of one chocolate is rupees 8 and find the cost of 10 such chocolate. Means if the cost of one chocolate, अगर एक चॉकलेट 8 रुपीस की है तो 10 चॉकलेट कितने की होगी. Now solve it. First, the cost of one chocolate is rupees 8 and the cost of 10 chocolate is, क्या करेंगे, 8 को 10 से मल्टीप्लाई, 8 into 10. Now answer is 10 8 80 rupees. Answer is 80 rupees. Now 10 chocolate की cost क्या होगी, 80 rupees. Next है a box can hold 7 pens. Okay, now how many pens can 4 box hold? Means one box में 7 pens आते हैं. Now 4 box में कितने आएंगे? Now we solve. A box can hold 7 pens. A box can hold 7 pens. Now 4 box can hold, क्या करेंगे, 4 into 7. 4 into 7, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. Now 4 into 7, 7 4 जा 28 pens और answer. Clear? Now third example. The cost of a diary. The cost of a
a diary is rupees 25. Now, what is the cost of 15 diary? Diaries. Now first, the cost of a diary is 25. Now what is the cost of 15 diaries? अगर एक डायरी की कॉस्ट 25 है तो 15 डायरी की कितनी होगी? Now solution. The cost of a diary is, what is the cost? 25. And the cost of 15 diaries is क्या करेंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 15. 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ सॉल्व इट. 25 into 15. 5 5 जा 25. 2 carry. 5 2 जा 10 and 2 12. Okay. Now put here cross. 1 5 जा 5. 1 2 जा 2. क्या करेंगे अब? इनको ऐड करेंगे. 5 and 2 7. 2 and 1 3. Now answer is 375 rupees. The cost of 15 diary is 375 rupees. Now we take one more example. One more example. Now for example, a bag of sugar weight 15 kg. Okay. Now what is the total weight of 456 bags of rice? Of sugar. Now first, a bag of sugar weight is 15 kg. And what is the total weight of 456 bag of sugar? Now solve. A bag of sugar is sugar weight is 15 kg. Okay. Now 456 bag sugar weight is 456 multiplied by 50. Okay. 456 multiplied by 50. Now first 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 0. Now first 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 से किया 0. Now put here 5 6 30 0 3 carry 5 5 25
22,800 kg. This is your answer. Okay. Now today's our topic is complete. If you like our video, please like and subscribe.